Now, Montreal Protocol, Kigali Amendment. Why we are reading this? Why we are dealing with this? Because the government of India has now decided to ratify the Kigali Amendment to the Montreal Protocol. Now, Kigali Amendment, Kigali is the capital of Rwanda. Rwanda is a country in South Africa, basically Africa. तो वहां पे ये किगाली अमेंडमेंट निगोशिएट हुआ था, इसीलिए दैट इज कॉल्ड किगाली अमेंडमेंट. इट वाज negotiated and adopted in 2016. Okay, it is an amendment to the Montreal Protocol. Montreal Protocol क्या है? Montreal Protocol deals with what? The ozone depleting substances. अब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलॉन्स और फ्रियॉन्स. हेलॉन्स या फ्रियॉन्स that are called ozone depleting substances. Halons or freons are thermal, like chemically and they have thermal stability in the troposphere. ठीक है? But when they escape the troposphere, when they go to stratosphere, the upper layer, they encounter like strong UV rays and they break down. Due to which what happens is उनकी जो thermal stability थी that ends and they start reacting with components that are being found in the stratosphere, and that is how they amount to the degradation or the loss of ozone layer that we'll be dealing with in a bit of detail right now. So why we are studying? Because India has now decided to ratify the Kigali Amendment to the Montreal Protocol. Understood? Now the story so far, as already we have been taking the stories, this is very important to understand कि development कैसे हुआ. How the development, what were the circumstances under which, and what has been the development, because that helps in retaining the information for a longer period of time. If we are able to connect that with the story or some kind of development process, then you will be able to retain the information for a longer period of time. So in 1988, Vienna Convention for Protection of Ozone Layer was signed. Around 1985, there was substantial evidence, scientific evidence about the role of what the freons and halons that are being used in AC and refrigeration on the degradation or decomposition of ozone layer. ठीक है, by the 1985. फिर 1987 में what happened was Montreal Protocol was negotiated between the countries to protect or to phase out such compounds or chemical compounds that are actually causing the depletion of ozone. Such chemical compounds at that time were CFC. CFC is chlorofluorocarbon. ठीक है, methyl bromide CH3Br, methyl chloride CH3Cl, chloroform. ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स जो यूज हो रहे थे हमारे यहाँ, most of these compounds are being used in AC and refrigeration. ठीक है, तो what happened was in 1987 Montreal Protocol was opened for signature, and in 1989 Montreal Protocol to the Vienna Convention was adopted. In 1988 Vienna Convention on Protection of Ozone Layer was adopted. Now there is a difference between convention and a protocol. Convention is not legally binding. Convention is not legally binding, whereas protocol is a legally binding set of instructions that a country has to follow once it ratifies it. Okay, one important thing about Vienna Convention and Montreal Protocol is these this is the only convention that has been universally accepted. 198 countries have ratified it. Okay, and this is the only convention that has a universal acceptance. Okay, and it is one of the most successful conventions that till date now in the field of at least environment. फिर बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बीजिंग अमेंडमेंट, ठीक है, मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट 1997. These amendments were done so that the targets can be revised. Okay, the existing the achievements can be appreciated and all these things. In 2016, Kigali Amendment to the Montreal Protocol was done. Now, what happened was, in 1989, very important chemical compounds that were being used, like HFCs or CFC, CFC, CH3Br, ठीक है, CH3Cl, okay, these compounds CFC, okay,
तो दीज आर बेसिकली फ्रियॉन्स और हेलॉन्स. हेलॉन्स क्योंकि हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स इनके अंदर में है. ठीक है. तो व्हाट हैपेंड इज कि दे वर फेज्ड आउट अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज HCFCs केम. HFCs, ठीक है, HFCs and then HCFCs, hydrochlorofluorocarbons and then HFCs. What happened was HCFC was having very low like ozone depletion potential. ठीक है. These compounds are having very high ozone depletion potential. Ozone depletion potential मतलब the potential, the ability to erode or destroy the ozone layer. These compounds were having very high. Gradually HCFC पे shift हुआ. HCFC was allowed. HCFC had a very small percentage of ozone depletion potential, but still it was also phased out. And then HFCs are now being used. लेकिन 2016 में किगाली अमेंडमेंट, 2016 में किगाली अमेंडमेंट that we are talking about has phased this out also. Why? इसका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल जीरो है. HFCs का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल जीरो है. बट व्हाई आर वी स्टिल फेजिंग इट आउट? बिकॉज HFCs despite having a zero ozone depletion potential, they have very high global warming potential, around like 90,000 times of carbon dioxide, sorry 9,000 times of carbon dioxide, around 9,000 times of, again मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जितनी वार्मिंग प्रोड्यूस करेगा उसके 9,000 टाइम्स ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करेगा HFC, लेकिन ये ओजोन डिप्लेशन नहीं करेगा. तो it was a very huge concern that it was having a very high global warming potential despite it having a very low ozone depletion potential. This is ozone depleting potential, this is global warming potential. Ozone depleting potential zero है, लेकिन global warming potential is about 9,000 times that of carbon dioxide. CO2 के लिए GWP यानी global warming potential is considered 1 and then उसके रिस्पेक्ट में सारे कंपाउंड्स का हम कंसिडर करते हैं. अंडरस्टूड? बैक. तो दैट इज व्हाई आफ्टर द पेरिस डील ऑफ 2015, COP21 में जो पेरिस डील साइन की गई उसके बहुत एम्बिशियस टारगेट्स थे. दैट वर द लाइक वी हैव टू अचीव द कीपिंग डाउन द टेम्परेचर राइज बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस. टू अचीव दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फेज आउट HFCs. ठीक है. तो वी विल हैव टू लुक फॉर सम अदर ऑल्टरनेटिव्स फॉर फ्रीजिंग एंड ऑल दिस. तो HFCs वर आल्सो फेज्ड आउट बाय दिस अमेंडमेंट. Okay, by this amendment HFCs were also phased out. So we will try to understand a bit about ozone layer. What is ozone layer? So if we look at this diagram, this is Earth, 0 to 10 kilometer troposphere. Troposphere से थोड़ा सा ऊपर, like this is tropopause, ठीक है, and tropopause और ये stratosphere का 10 to 50 किलोमीटर ऊपर लेंथ. This is very simple. Troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, these all are like external atmosphere के जो basic parts हैं. Understood? Now 0 to 10 kilometer troposphere. What is ozone? Ozone is nothing but a chemical compound that has 3 oxygens attached to each other. Understood? Ozone is not a very thermally stable compound. It is a volatile compound. Okay, it is not a very thermally stable compound. Now ozone has a very strong effect in the lower atmosphere, but it is not, it is very harmful in the lower atmosphere, that is troposphere, but it is very beneficial in the upper atmosphere, that is stratosphere. What happens is कि in the lower atmosphere, if the ozone concentration increases, this causes photochemical smog. Photochemical smog. As I said, that ozone is not a very thermally stable compound. It is a volatile compound. It dissociates very easily. ठीक है? Because of the bonding nature that we are not going to deal with.
that is a part of chemistry, ठीक है. But still, in the lower, if ozone is present in the lower level of atmosphere, that is troposphere, it is going to cause photochemical smog. Understood? And that is very dangerous for our lungs. But in the upper level of atmosphere, that is in the like lower level of stratosphere and the upper level of troposphere, it is very beneficial. Why? Because it counters the UV radiations. Okay, UVB, ठीक है. UVB is a very harmful radiation that causes cancer, skin cancer. When continuous exposure to UVB can cause skin cancer, ठीक है. That is why the people flying in the upper atmosphere, ठीक है, like air hostesses, pilots, and all these people who are flying in the upper atmosphere, they are grounded for a certain period of time to reduce their exposure to the harmful UV rays, because the planes flying in the like upper levels of troposphere, they are continuously exposed to the harmful UV rays. Understood? And this ozone layer, what it does is it utilizes basically this UVB radiation, ठीक है, it utilizes UVB radiation and it absorbs UVB radiation and it prevents that from reaching Earth. That is why stratospheric ozone is very good and tropospheric ozone is very dangerous. Understood? तो अब ये ओजोन लेयर है क्या? ओजोन लेयर इज नथिंग बट अ लेयर, अ जोन वेयर ओजोन concentration is very high. Understood? Now, as I told, ozone is not a very thermally stable compound. It dissociates very easily. Understood? So, why is ozone layer depleting? Why is ozone layer depleting? That we have to deal with. This is not very tough. It's very easy actually. What happens in normal circumstances is, okay, why is ozone layer depleting? ठीक है. So what is the natural method of formation of ozone layer? As I said कि ozone is not a very it is not very thermally very stable. It is thermally not very stable. What happens is it is a reversible chemical reaction continuously going on. O2 plus O go to for O3. It is a reversible chemical reaction in the presence of H nu. H nu represents energy or sunlight, whatever UV it is. Okay. That means one molecule of oxygen combines with one atom of oxygen and forms one molecule of ozone. Similarly, one molecule of ozone dissociates into one molecule of oxygen and one free radical or one atom of oxygen. This is usual method. This is usual process that is going on in the ozone layer. That is how ozone layer is formed. Now, what happens? This is the scenario when there is no halon present in the atmosphere. Lekin, for example, one like CF3Cl. For example, chlorofluorocarbon CF3Cl. ठीक है? तो it has sorry. Okay. What happens is CF2Cl2 is a compound. CF2Cl2. Okay, Cl2. CF2Cl2. When this is a chlorofluorocarbon. ठीक है? When this reaches in the upper atmosphere, what happens is it breaks down into chlorine radical. ठीक है? ये जो ऊपर डॉट है, that means it's a free atom. It is a radical. Okay. Plus CF2Cl. Okay. CF2Cl. उसके बाद क्या होगा? Now this one free atom is present, and as we saw in the previous slide कि oxygen normally ozone layer बनती कैसे है? There is a continuous reaction going on. O2 plus O, ठीक है? Go to for, come back, O3. This is a continuous reaction of formation and decomposition of ozone. Oxygen molecules combine with oxygen atom to form ozone. Ozone dissociates into oxygen molecule and oxygen atom. Fine. Now what happens is
see there is a free radical. Free radical is a very active atom that has a very high affinity of bonding. What happens is, this is also a free atom, a free radical. What happens is Cl plus O, ठीक है, क्योंकि ये एक ही जगह सारा प्रेजेंट है, ओके, तो what happens is Cl plus O go to for chlorine oxide, fine. It is sorry, Cl plus, what happens is chlorine is actually very active, है ना, and this forms, this reacts as ozone, sorry, है ना, तो ClO plus O2, this is formed. Chlorine oxide and oxygen atoms are formed. Now this chlorine oxide also reacts with what? Free radical oxygen, ClO plus oxygen, जो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल है ये वाला, ओके, इसके साथ रिएक्ट करके दिस फॉर्म्स व्हाट? Cl free radical plus oxygen. Again, what you see here is, ये तो सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आई तो ठीक, नहीं आई तो भी कोई बहुत बुरी बात नहीं। क्यों? क्योंकि what you need to understand here from UPSC point of view कि हो क्या रहा है। CF2Cl2 पहले क्या था? ओजोन लेयर, ये ऐसे नॉर्मली फंक्शन करती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम से मिलके ओजोन बना रहा था, एंड देन ओजोन वाज डिसोसिएटिंग इनटू ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड oxygen atom. This was a reversible dynamic reaction that was continuously going on, and ozone was being formed and dissociated by the use of Hnu या sunlight के presence में। लेकिन अब क्या हुआ? When you have introduced a certain kind of chlorofluorocarbon into the stratosphere, ठीक है, what happens is chlorine पहले बना free radical और CF2Cl बना, लेकिन you can see कि पहले जो ozone was normally disassociating back into oxygen and oxygen atom, but now this ozone is reacting with chlorine free radical, and this is actually forming chlorous oxide या chlorine oxide and oxygen, and then chlorine oxide is again reacting with oxygen free radical and then also forming chlorine free radical. मतलब ये जो chlorine free radical है, that is the point जहां पे ओजोन रिएक्ट करना शुरू कर जाएगी, and instead of making oxygen it will start making chlorous oxide, ठीक है ना, क्योंकि this reaction was a reversible reaction that was continuously going on. Now you see is ozone is being depleted. Why? Ozone instead of going through this reaction is going through this reaction. That means ozone is now being used up and in making chlorous oxide and oxygen. Oxygen is present, but ozone is getting used up further in this reaction. When chlorine oxide again reacts with ozone, देखो दो चीजें हो रही हैं, एक तो ओजोन यहां से यूज हो रही है, और दूसरा जो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनाता, वो भी यूज्ड अप हो रहा है, एंड अगेन क्लोरीन इज बीइंग फॉर्म्ड, एंड क्लोरीन इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग यूज्ड अप ऑफ ओजोन. दिस इज द रीजन व्हाई स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन स्टार्ट्स डिप्लीटिंग मतलब खत्म होना, ठीक है, when we introduce any kind of chlorofluorocarbon into the upper troposphere या lower stratosphere. Yes, ozone layer में when chlorofluorocarbon enters, what it does is it forms a chlorine free radical. This chlorine free radical start reaction with ozone and forms chlorous oxide, and that chlorous oxide does a reaction with ozone free radical and forms more chlorine. तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बहुत अबंडेंट अमाउंट में आउटपुट पे मिल रहा है, लेकिन हमें कहीं भी आउटपुट पे ओजोन नहीं मिल रहा है, बट हमें क्या मिल रहा है? क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल रहा है, कि विच इज ऑलरेडी यूजिंग, मतलब क्लोरीन फ्री रेडिकल जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा ओजोन विल बी गेटिंग यूज्ड अप, है ना, क्योंकि क्लोरीन फ्री रेडिकल से ही ओजोन का डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है. तो दिस इज द नेचुरल, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या any kind of such halons that we release in our atmosphere, and when they travel up to the troposphere or stratosphere, this is how they use up the ozone and produce more chlorine free radicals. ठीक है, तो ये तो एक पर्सपेक्टिव है इसको देखने का. ओके, तो this was the reaction. अगर then question arises, then why ozone hole at poles? Then we often in news see
कि देयर हैज बीन अ ओजोन होल इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे बहुत बड़ा ओजोन होल है। पूरे अर्थ के अराउंड जो ओजोन है वहां पे ओजोन होल क्यों नहीं है? व्हाई इज नॉट देयर ओजोन होल एट इक्वेटर? तो why is there an ozone hole at poles? That is a very important consideration that we are going to take now. So what happens is, it's a very interesting explanation, and although formation of polar stratospheric clouds is not very well understood in the meteorology, but still we'll be trying to understand through the existing literature on this whole process. What happens is, stratospheric ozone holes are formed in like spring or early summer. ठीक है, तो this is earth, okay, not very earthy kind of, but still this is equator, these are the poles. ठीक है, तो of course we know that the earth is tilted by 23.5 degrees. For example, if we consider that there is a winter in the southern hemisphere, जब विंटर होगी सदर्न हेमिस्फीयर में तो दिस इज 23.5 डिग्री, ठीक है, तो सन यहाँ के स्ट्रेट होगा एंड दिस पोल विल बी गेटिंग abundant light and this pole will not be getting any light for 6 months. This is the fundamental thing that we all agree upon. This is sun. Fine. So what will happen now कि in this area, in this region, again ये एक बहुत important point है कि ओजोन होल forms mostly at the Antarctica and for a longer period. मतलब the size of ozone hole that is formed in Antarctica is larger than the size of ozone hole formed at Arctic pole, है ना, Arctic pole है ये, और ये Antarctic pole है सदर्न। तो अंटार्कटिक पोल पे जो ओजोन होल बनता है उसका साइज भी बड़ा है, ओके, एंड इट परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके पीछे तो ये वजह है सिंपल सी कि जो ओजोन होल का फॉर्मेशन है दैट इज एडेड बाय अ लोअर टेम्परेचर. विल बी डीलिंग विद दिस हाउ एडेड विद लोअर टेम्परेचर, बट वी अंडरस्टैंड दैट अंटार्कटिका has for like this axis represents months, ठीक है, like January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, and this axis represent temperature, ठीक है. तो ओजोन होल के फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में -78 डिग्रीज का टेम्परेचर या इससे कम रहना, ठीक है. वी विल बी डीलिंग बाय -78 डिग्री पे क्या होता है, वी विल बी डीलिंग विद दैट, बट एक फंडामेंटल अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि -78 डिग्री से टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तभी ओजोन होल का डिप्लीशन स्टार्ट होगा. दैट विल बी द टेम्परेचर वेयर ओजोन होल डिप्लीशन विल बी फेवर्ड. What happens is कि if we choose this, okay, if we choose this black line for Antarctica, so this will be for Arctic, ठीक है. मतलब you know that from this graph you can understand that for Arctic the fall in temperature is also low and it is for a lower period of time as compared to the black. This is -78 डिग्री सेल्सियस लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन. वी कैन सी दैट फॉर द ग्रीन लाइन, ठीक है, ये आर्कटिक के लिए रिप्रेजेंट करती है एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स अंटार्कटिक. वी कैन ऑब्जर्व दैट फॉर आर्कटिक पोल, फॉर द नॉर्थ पोल बेसिकली द अमाउंट ऑफ फॉल इन द टेम्परेचर with respect to the -78 degree line and the amount of period for which the temperature has fallen, both are low for Arctic one. But for Antarctic, the temperature goes around -128 degrees Celsius in the upper troposphere, as of course we are talking in the lower stratosphere or the upper troposphere. This is not we are talking about on the surface. We are talking about the upper troposphere. Now, ये अभी के लिए you remember this, ठीक है? Then what happens is, we have to add. Okay. Then what happens is, ठीक है, तो अभी हमने ये चीज समझा कि नॉर्थ पोल में
नॉर्थ पोल के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर या अपर ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो एक लोअर रेंज में रहता है। मतलब अगर इफ वी ड्रॉ दैट ग्राफ अगेन, इफ दिस इज -78 डिग्री लाइन, सॉरी -78 डिग्रीज लाइन है ना, ये डॉट 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 -78 डिग्री लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो दिस इज फॉर अंटार्कटिक यानी साउथ पोल, एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल। दैट इज -78 डिग्री से ये -80 डिग्री होगा, है ना, -100 डिग्री होगा, ये -120 डिग्री। तो वी कैन सी दैट फॉर द साउथ पोल, है ना, साउथ पोल द टेम्परेचर हैज फॉलन टू अ हायर डिग्रीज, है ना, एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर टू द अंटार्कटिक और आर्कटिक या नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में साउथ पोल का टेम्परेचर ज्यादा नीचे गया है एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर टू द नॉर्थ पोल। दिस एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, अब इसके बाद हुआ क्या, इसका इफेक्ट क्या है, दैट विल ट्राई टू एनालाइज। ठीक है, why polar stratospheric clouds are formed, like why is ozone depletion around poles only and not around the whole earth, and why is a bigger ozone hole in the Antarctic? We are trying to analyze that. Understood? Now again, if you come back to the whole process, so what happens is in stratospheric ozone in summers, ठीक है, in summers, if you write in summers, during summer क्या होगा, क्लोरीन ऑक्साइड, अगेन क्लोरीन ऑक्साइड प्लस NO2. Now where does NO2 come from? Nitrous oxide is already present. Why is not nitrous oxide present? Because nitrogen is present in our atmosphere and oxygen is also present, and in the upper layers what happens is due to high energy nitrous oxide is naturally formed, because nitrogen is 72% of our atmosphere, and nitrogen in the lower atmosphere, what happens in troposphere, what happens is कि nitrogen is thermally very stable, because the higher energy radiations like UV are not able to reach the lower atmosphere. ठीक है, but in the upper atmosphere like stratosphere, ionosphere, in these layers what happens is nitrogen naturally reacts with oxygen in the presence of like high energy wavelength, like high energy rays, like what UV rays and all, nitrous oxygen is naturally found. Okay, now chlorine oxide reacts with nitrous oxide to form ClONO2. This is called chlorous nitrous oxide. And now you can see now that chlorine oxide, as we have seen in the earlier slide, that chlorine oxide was responsible for reacting with oxygen to form chlorine free radical and oxygen. See, there was a reaction in the previous slide, वो ये reaction थी, chlorine oxide plus oxygen go to for Cl, ठीक है, chlorine go to for Cl plus O2. This is Cl. Now यहाँ पे why are we talking about Cl? Cl is the reactive compound. Chlorine free radical is a reactive compound. If it is present in free radical form, it will react with ozone. इसकी भी हमने रिएक्शन पहले देखी है, क्लोरीन प्लस ओजोन, okay, go to for chlorous oxide and ozone, thereby consuming ozone. Now what happens is we have to minimize the possibility of happening this. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, what if chlorous oxide reacts with nitrous oxide? अगर क्लोरस ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेगा तो इट विल फॉर्म क्लोरस नाइट्रस ऑक्साइड, एंड दिस इज स्टेबल. This is stable means now you can understand that chlorine has been taken away from its reactive form to a stable form. That is why this is called a reservoir of chlorine. मतलब it is taking away the reactive chlorine and forming a reservoir. This happens in summers. अब what happens in winters? ठीक है,
I hope you are catching up with me. I hope this is not very tough, है ना? This is actually interesting and a part of syllabus also. तो again, this was what happened in, मतलब वहां पे नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट है एंड देन नाइट्रस ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन ऑक्साइड एंड क्लोरीन इज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ ओजोन. दिस इज हाउ ओजोन इज प्रिजर्व्ड, अदरवाइज सारी ओजोन ही डिप्लीट हो जाएगी. लेकिन इन विंटर्स what happens is, in winters excessive cooling takes place in the north pole or in the south pole, या जहां भी विंटर है. फॉर एग्जांपल साउथ पे विंटर चल रही है अभी, तो साउथ पोल में क्या होगा, एक्सेसिव. साउथ पोल ये है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे कोई धूप ऊप आ नहीं रही है. क्यों? क्योंकि सारी धूप नॉर्थ पोल में जा रही है अभी, और पार्ट ऑफ साउथ पोल है ना, दिस इज द इल्यूमिनेटेड पार्ट. साउथ पोल इज इन परपेचुअल डार्कनेस फॉर 6 months. अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा कूलर एनवायरमेंट अपर एटमॉस्फेयर में भी क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, पोलर वॉर्टेक्स ऑफ कोर्स. अब यहाँ पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कुछ भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है. पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का मतलब हुआ कि पोल्स के अराउंड स्ट्रेटोस्फेयर में, कहाँ पे, पोल्स के अराउंड स्ट्रेटोस्फेयर में, अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में क्लाउड फॉर्म हो रही. क्लाउड का मतलब बेसिकली H2O, सिंपल, बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट. अब यही प्रॉब्लम है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन ही प्रॉब्लम है. कैसे? विल बी अगेन टेकिंग दिस आउट. नाउ इन विंटर्स अगेन वी हैव सीन दैट ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड, है ना, एक्सेसिव कोल्ड, आइदर आइस पार्टिकल्स और वाटर पार्टिकल्स आर बीइंग फॉर्म्ड. अब हुआ क्या, ये आइस स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद NO2. पहले क्या था, समर्स में ये आइस प्रेजेंट नहीं थी, वाटर भी प्रेजेंट नहीं था, तो ये NO2 किसके साथ रिएक्ट करता था, क्लोरस ऑक्साइड ClO के साथ, एंड देन ClO NO2 बनाता था रिजर्वॉयर एंड क्लोरीन वाज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ ओजोन. नाउ व्हाट हैपेंस इज H2O NO2 के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाता है. दिस इज नाइट्रिक एसिड, अंडरस्टूड. एंड व्हेन द साइज स्टार्ट्स ग्रोइंग अप बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कोल्ड, ठीक है, तो ये HNO3 के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्रो अप स्टार्ट करना, मतलब दे स्टार्टेड ग्रोइंग अप इन द अपर ऑफ कोर्स ट्रोपोस्फेयर, मतलब जहां पे ये सारी रिएक्शन हो रही है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, स्ट्रेटोस्फेयर में. एंड देन व्हेन दिस मॉलिक्यूल बिकम्स बिग इनफ, इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन. It starts falling down. Means nitrous oxide that was earlier present is being taken away. मतलब denitrification is taking place. Okay, denitrification. अब denitrification का ड्रॉबैक क्या है कि we are taking, actually this reaction is taking the nitrous oxide away. That means chlorine is now more free to react. अब क्लोरीन रिएक्ट लेकिन करेगा कब, जब ऑफ कोर्स यूवी होगी. लेकिन साउथ पोल में तो अभी यूवी है नहीं, क्योंकि साउथ में विंटर चल रहा है. अब ड्यू टू विंटर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं एंड दे टेक अवे अ लॉट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ HNO3. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल की तरह तो प्रेजेंट है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहा होगा. क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है रिएक्ट करने की, ड्यू टू एक्सेसिवली लो टेम्परेचर्स एंड लैक ऑफ सनलाइट. तो ओजोन भी पड़ी होगी, लेकिन ये भी रिएक्ट नहीं कर रही होगी. ठीक है, दिस विल बी गोइंग. बट एज सुन एज समर्स अप्रोच या स्प्रिंग्स कम, तो यहाँ पे सनलाइट पड़ना स्टार्ट हो जाएगी एंड दैट सनलाइट विल प्रेजेंट थ्रू आउट द डे, बिकॉज अब 6 months के लिए तो सनलाइट परमानेंटली रहेगी. एंड उस ड्यूरेशन में क्लोरीन रेडिकल फ्री है रिएक्ट करने का अपने मन के हिसाब से. It will be reacting with any ozone, it finds everything it finds and it will be taking away all the ozone. And that is why पोल्स के अराउंड ओजोन होल पाए जाते हैं और बाकी अर्थ के अराउंड नहीं पाए जाते. अंडरस्टूड. अब एक ये कंसिडरेशन है कि why साउथ पोल इज हैविंग अ लार्जर होल एज कंपेयर टू द नॉर्थ पोल. तो इसका बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि नॉर्थ पोल में ऑल्दो लैंड एरिया ज्यादा है, मतलब एमिशंस ऑफ हेलॉन्स भी ज्यादा नॉर्थ पोल में है, बट द नॉर्थ पोल
is not having enough low temperature. Understood? The starting में जो curve we remember कि because the fall of temperature that facilitates the formation of polar stratospheric clouds that will eventually take away the nitrous oxide, and the nitrous oxide in form of nitric acid is low in the North Pole. Why? Again, why? Because the fall in temperature and for the amount of period for which the fall in temperature is lower in the North Pole as compared to the South Pole. I hope you understood this very important and interesting topic. है ना? और अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज एक बार इसको देखिए. I have tried my best and there could be no better explanation I think. But still if you have not found it satisfactory, you can comment in the comment section and I'll be definitely taking up the comments जहाँ पे आपको समझ में ना आया. Fine. Okay. तो I hope you understood ये सारा. अब Montreal Protocol. It is aimed at protecting Earth from ozone depleting substances. Ozone depleting substances like HFC, CFC. Okay, HFC is not a ODS, but still HCFC, CFCs, methyl bromide, and all these halons. ठीक है. Later, starting May, it was limited to CFCs. Later, it was extended to HCFCs. HCFCs do not, but HFCs do not deplete the ozone layer. Only they have high global warming potential that we already read. India became the party to convention in 1991 and then Kigali Amendment. Now Kigali Amendment is why has been the Kigali Amendment been brought? Kigali Amendment sets a newer deadlines for the countries to remove their HFC emissions. ठीक है? It is only about HFC emissions. Kigali Amendment is not about anything else. It is about restricting or limiting the HFC emissions. Okay? So developed countries में, okay, there are three kind of countries. Developed countries में USA आएगा. Developing countries including China, a group of countries that have been included in this group, group 2, and other countries like in India, Pakistan, all these countries, Iran, they have been included in this group. तो आपको ये timelines थोड़ा अच्छे से पढ़नी है. That is what you have to remember कि reduction in HFC by 10% by 2019. Base period has been kept 2011. मतलब 2011 के comparison में 2019 तक these countries, developed countries have to reduce their emission by 10%. मतलब अगर 2011-13 में आपका emission 100 यूनिट था तो 10% आप कम कर दो. 2019 तक आप 90 यूनिट तक emission को ले आओ. ये इसका मतलब है. And by 2036 the reduction should be done by 85% of the base period 2011-2013. Developing countries including China के लिए reduction of 10% by 2029. डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ट्रांजिशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2019. डेवलपिंग कंट्रीज वो वाला ग्रुप जिसमें चाइना है, उन कंट्रीज के लिए द ट्रांजिशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2029. अब 2029 में तक इनको अपना 10% लेवल कम करना है. बेस ईयर क्या है इनके लिए 2022, यानी 2022 में इनका जो एमिशन जो लेवल था HFC का उसको कम करना है 10% तक बाय 20, यानी 9 ईयर का पीरियड है इनके पास. 2020 अभी से ही अगर ये स्टार्ट कर दे तो भी मतलब काफी टाइम है अभी. तो इनको 2022 के जो लेवल्स हैं, 2020 में जो एमिशन के लेवल्स थे HFC के, उसका 10% तक रिड्यूस करना है बाय 2029 और 80% तक रिड्यूस करना है बाय 2045. और अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इनको अपना प्रोसेस ऑफ रिडक्शन स्टार्ट ही करना है 2028 से. ओके. और दे हैव टू अचीव 10% रिडक्शन बाय 2036, जहां पे 2036 में डेवलपिंग कंट्रीज वुड हैव रिड्यूस्ड बाय 85%. डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, दीज कंट्रीज हैव बीन गिवन मोर रूम. ठीक है, तो दे कैन रिड्यूस द 10% बाय 2036 ऑफ द 2024-26 बेस ईयर एंड देन 85% बाय 2047. तो 2047 तक 85% emission reduction का टारगेट HFCs के लिए रखा गया है. That is what Kigali Amendment is about. Now Indian government has ratified the amendment and now India will be taking steps to ensure that we achieve the target of Kigali Amendment. I hope that is all for Montreal Protocol, ozone depletion.